let's see this question. The question says, if three infinite charge set of uniform surface charge densities sigma, 2 sigma and minus 4 sigma are placed as shown in figure, then find out the electric field intensities at point A, B, C and D. सो इस क्वेश्चन में तीन हमें चार्ज सेट्स दिए गए हैं जिन पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज जो है वो है सिग्मा, 2 सिग्मा और माइनस 4 सिग्मा, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज इन चारों पॉइंट से फाइंड करनी है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite charge sheet is given by E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, where sigma is equal to charge densities. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज शीट की, वो इस फॉर्मूले के थ्रू दी जाती है, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन में. एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू EA, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा upon 2 epsilon naught j cap plus 2 sigma upon 2 epsilon naught j cap minus 4 sigma upon 2 epsilon naught j cap. After solving this, we will get EA is equal to minus sigma upon 2 epsilon naught j cap. This is the field intensity at point A. Now at point B, we will get EB, it will be equal to minus 4 sigma upon 2 epsilon naught j cap plus 2 sigma upon 2 epsilon naught j cap minus sigma upon 2 epsilon naught j cap. This minus is due to the direction of minus j cap. On solving this, we will get minus 3 sigma upon 2 epsilon naught j cap. This will be at point B. Now at point EC, it will be equal to minus 4 sigma upon 2 epsilon naught j cap minus sigma upon 2 epsilon naught j cap and minus sigma upon 2 epsilon naught j cap. Here it will be 2 sigma upon 2 epsilon naught j cap. So all these values are in minus, so the answer will be in minus, that is minus 4 plus 1 5 and then 7 sigma upon 2 epsilon naught j cap. Now at point D, we will write minus 4 sigma upon 2 epsilon naught, but the direction will be minus j cap, then minus sigma upon 2 epsilon naught j cap and minus 2 sigma upon 2 epsilon naught j cap, and this will become in positive sigma upon 2 epsilon naught j cap. So these are the final answers, that is EA is equal to sigma upon 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught j cap, and EB is equal to minus 3 sigma upon 2 epsilon naught j cap, and EC is equal to minus 7 sigma upon 2 epsilon naught j cap, and at ED is equal to sigma upon 2 epsilon naught j cap. I hope you understood it well. Best of luck.